Video we will learn how we can write non-terminating repeating decimal expansion in the form of p upon q. मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में एक डेफिनेशन बताई थी रेशनल नंबर की इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने बताया था इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर टर्मिनेटिंग, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए और it will non-terminating repeating. It will be terminating suppose 0.62. After some decimal places it will be terminated. It means we are after some decimal places we get the remainder 0. Then it is terminate. If it is not terminate, non-terminating, then the digit or sequence, the particular digit or a sequence of digits is continuously रिपीटिंग। एक डिजिट या डिजिट का सीक्वेंस कंटिन्यूअसली क्या होगा, रिपीट होगा। सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। ये किस टाइप के नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रेशनल नंबर्स का। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, सपोज दिस इज 0.9999 एंड सो ऑन। This is non-terminating, repeating. Repeating means recurring. यहां क्या हो रहा है, एक डिजिट पर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। इट इज, तो क्या करते हैं हम, जो द डिजिट दैट इज कंटिन्यूअसली रिपीटिंग, वी पुट द बार ओवर इट। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 0.9999 इज रिप्रेजेंटेड एज 0.9 बार एंड दैट बार इंडिकेटिंग दैट 9 डिजिट्स रिपीटिंग इनफाइनाइटली, यानी रिपीट होता रहेगा। इट विल नॉट, द डिवीजन विल नॉट बी टर्मिनेट, यानी डिवीजन टर्मिनेट नहीं होगा। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 0.385 dot. It means here only single digit is repeating. Here the sequence of this, see 385 and 385 is continuously repeating. A sequence of digit is continuously repeating. एक digit का sequence क्या होता है, continuously repeat हो रहा है। Then it is written as 0.385 and bar on the digit that are repeating. डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं, ये सीक्वेंस डिजिट का रिपीट हो रहा है 385, तो हम बार इन तीनों को ऊपर राइट करें। तो मैंने बताया था द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। जब वो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो डिजिट्स आर सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उन नंबर्स को क्या कहेंगे, रेशनल। इफ दे आर रेशनल, देन हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q not equals to 0. If they are rational, then they can be written in the form of p upon q. अगर ये रेशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको p upon q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ वी कैन राइट द डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इन द फॉर्म ऑफ p upon q. सो लेट्स स्टार्ट। टेक दिस एग्जांपल। इट इज सिंपल व्हेन द डिजिट्स आर, व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग है, तो it is very easy. We write in the form of p upon q 0.62. Remove the decimal and put 20 and simplify कर लिया। तो टर्मिनेटिंग वाला तो इजीली p upon q की फॉर्म में चेंज होता है, बट when the decimal expansion is non terminating repeating होगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। Let's see an example. Suppose we have to convert 0.9999 dot dot
dot. We have to convert this in the form of P upon Q. Okay, then how we can convert? First we write this as 0.9 बार. I already told you, मैंने अभी बताया था कि जो डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं. बार इंडिकेट करता है कि वो डिजिट या सीक्वेंस ऑफ डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है. नाउ वी लेट x equals to 0.9 bar. Now we can write this x equals to 0.999 dot dot dot. That is equation 1. इस फॉर्म में राइट कर लिया. 9 हम 4 टाइम्स लिखे, 5 टाइम्स लिखे, दैट आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि डिवीजन टर्मिनेट ही नहीं होगा. सो x इक्वल्स टू दिस, वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस. नाउ वी सी हाउ मेनी डिजिट्स हैविंग अ बार ओवर देम. हमें जिनको जिस डेसिमल एक्सपेंशन को p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, उसमें कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है. हियर ओनली द वन. इफ वन डिजिट इज देयर, we multiply by 10. if bar over 2 digits, suppose ये होता 0.01 bar, here bar over 2 digits, so we multiply by 100. if bar over 3 digits 0.023, then we multiply by 1000. अगर ये होता 0.237 bar, after decimal 3 digits are there, but bar over only 2 digits. 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का. सो हियर वी मल्टीप्लाई 100. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10. हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ओनली वन डिजिट हैविंग अ बार ओवर इट. केवल एक ही ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार है. नाउ मल्टीप्लाइड बाय 10. दिस इज 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट डॉट. मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड, सो दैट द इक्वेशन रिमेंस बैलेंस. इसलिए इक्वेशन क्या रहे? बैलेंस रहे. Now this is 10x equals to, this is shifted, decimal place is shifted here. If we multiply then one place to the right, so we write as 9.999 dot dot dot. That is equation 2. अब आप ये कहेंगे कि मैंने यहाँ तो ये सीधा शिफ्ट कर दिया, तो here only two nines are left. इनफाइनाइट नंबर ऑफ नाइन्स हैं, तो हम इक्वल ही करेंगे आफ्टर डेसिमल दोनों इक्वेशन में. क्लियर? नाउ व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2. we subtract equation 1 from equation 2. हम equation 1 को equation 2 से subtract करेंगे. now subtract equation 2 is that 10x equals to 9.999 dot dot dot. that is equation 2. equation 1 is that x equals to 0.999 dot dot dot. that is equation 1. if we subtract after decimal same number of nines are there, decimal के बाद same number of 9 है, so we get 0 here. 0.9 minus 0 9. 10x minus x means 1x, 9x. So 9x equals to 9.
x equals to 9 upon 9, that is equals to 1. So x equals to 1. Clear? The question is that we have to write 0.47 in the form of p upon q. पहले हमने ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिया था, हमने क्या लिया था 0.999 यानी 0.9 बार. इसमें क्या था, आफ्टर डेसिमल ओनली रिपीटिंग डेट्स आर देयर बट इट हैव रिपीटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग. जिसके ऊपर बार है वो इंडिकेट करता है रिपीटिंग है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो है नॉन रिपीटिंग. यानी हमने ऐसा एग्जांपल लिया इसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होंगे, बट द प्रोसीजर इज सेम. सो व्हाट इज दैट, लेट x equals to 0.47 bar. This can be written as x equals to 0.4777 dot dot dot. That is equation number 1. जैसा हमने पहले किया था, हमने जो रेट रिपीट हो रहा है उसको रिपीट कर दिया, जो ये नॉन रिपीटिंग था तो इसको नॉन रिपीटिंग ही रखा. अब देखेंगे हाउ मेनी डेट्स आर रिपीटिंग. कितने डेट्स के रिपीटिंग डेट्स कौन बताता है, बार ओवर द डेट्स, बार ओनली ओवर द 7. सो ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग. जब एक डिजिट रिपीटिंग होता है व्हाट वी विल डू, वी मल्टीप्लाई बाई 10. सो मल्टीप्लाई equation 1 by 10. Let's multiply. 10x equals to 10 into 0.4777 dot 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 multiply. This is 10x. If you multiply it, decimal is shifted there. यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा. That is 4.777 dot dot dot. That is equation 2. मैंने बताया था सेम नंबर ऑफ डिजिट रखेंगे 7. इधर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो इस इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट रखेंगे. आफ्टर दैट प्रोसेस सेम है. सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर देंगे. सबट्रैक्ट equation 1 from equation 2. What will be the first equation? Second equation. Second equation is that 10x equals to 4.7777 dot dot dot. That is equation number 2. What will be the first equation? X equals to 0.4777 dot dot dot. That is equation number 1. ये equation 2 है, ये equation 1 है. Now let's subtract. This is all the after that all are 7s, so it becomes 0. What is this? 7 minus 4, that is 3 point. This is 4, this is 9x, or we can say 9x equals to 4.3. 4.30. X equals to 4.30 over 9. Move the decimal into 100. 0 से कैंसिल आउट. x equals to 43 upon 90. And what we let x, हमने x क्या माना था, इसको x is this. So this in the form of p upon q is 43 upon 90. Let's then understand and solve the remaining question that is given in your exercise 1.3.